welcome to the channel Demystify. Today we are going to discuss theme 3, Kinship, Caste and Class, for our class 12 history. Now guys, we have already discussed theme 1 and theme 2 in the previous videos. Do check out on my channel. Guys, मैं हर चैप्टर के स्टार्ट के पहले वेरी क्लियरली बोलती हूँ, योर NCERT इज़ योर बाइबल. आप the only way and the only key to crack your board exams, to crack your CUET, to crack your even UPSC जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है फॉर IAS IPS लेवल, उसके लिए भी यू आर रिपीटेडली टोल्ड रीड NCERT. सो गाइज, आप जितनी बार NCERT पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा. एंड it's not only enough to read your NCERT again and again, quality भी ज़रूरी है कि how you are reading it. आपको बिल्कुल pay attention करना है to every word you are reading. And guys, believe me, NCERT का every word is important. You cannot ignore any word. And guys, another thing, notes don't work. You'll have to depend on the NCERT only. सो ये मैं आपको पहले वीडियोस में भी समझा चुकी हूँ. एंड इन एवरी वीडियो आई गिव यू द सेम एडवाइस, रीड योर NCERT अगेन एंड अगेन. ओके, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कीप रीडिंग योर NCERT एंड यू विल बी ऑल फाइन. सो गाइस, हमने पहले वाले चैप्टर में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, सेकेंड वाले में हमने मौर्यंस एंड गुप्ताज एंड उस वाले बारे में पढ़ा. नाउ वी आर रीडिंग किनशिप, कास्ट एंड क्लास अर्ली सोसाइटीज़ फ्रॉम 600 BC to 600 CE, circa 600 BC. In the previous chapter, we saw that there were several changes in economic and political life between 600 BC and 600 CE. हम already discuss कर चुके हैं क्या क्या changes हैं. This can be a question, megaliths बनने लगे, the usage of iron, emergence of early states, etc. etc. Some of these changes influence societies as well. For instance, the extension of agriculture into forested areas transformed the lives of forest dwellers. Craft specialists often emerged as distinct social groups. The unequal distribution of wealth sharpened social differences. तो अब जैसे एग्रीकल्चर ग्रू, ज़्यादा फैलने लगा, ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करने लगे एज देयर ऑक्यूपेशन, तो इस वजह से सोशल डिफरेंसेस बढ़ने लगे. कास्ट और नॉट ओनली लाइक इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल डिफरेंसेस भी बहुत शार्पन होने लगे. ओके, एंड क्राफ्ट स्पेशलिस्ट वगैरह ऐसे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इमर्ज होने लगे. हिस्टोरियंस ऑफन यूज टेक्सचुअल ट्रेडिशंस. देखिए, हर उसमें आपका आपके व्हाट आर द sources are very important. पहले वाले चैप्टर में भी, in the first 2 chapters also, in this chapter, in every chapter, what are the sources जिससे हमें पता चलता है जो हम पढ़ रहे हैं अभी. So what are the sources for this are textual traditions to understand these processes. Some texts lay down norms of social behavior. Others describe and occasionally comment on a wide range of social situations and practices. हम already एक hint देख चुके हैं first chapters में, मनुस्मृति, the Dharma Sutras, the Rig Veda, the Vedas. We can also catch a glimpse of some social actors from inscriptions. As we will see, each text and inscription was written from the perspective of specific social categories. So we need to keep in mind who composed what and for whom. We also need to consider the language used and the ways in which the text circulated. Used carefully, texts allow us to piece together attitudes and practices that shaped social histories. It is very important for us to remember. ये हमारे लिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम जो टेक्स्ट पढ़ते हैं, they are not factual information. वो फैक्ट्स से ज़्यादा एज इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री और व्हाट वाज वांटेड आउट ऑफ पीपल, या क्या होना चाहिए या क्या है, दैट्स नॉट इट. जो टेक्स्ट हम पढ़ते हैं जितने भी, इट इज़ नॉट अबाउट क्या चीज़ है, इट्स अबाउट कैसे, क्या होना चाहिए, व्हाट इज़ द आइडियल थिंग. ओके, सो मैं इसीलिए इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड वेन एवर वी आर रीडिंग द टेक्स्ट, दीज जो हमारे ये सोर्सेज पढ़ रहे हैं, द हिस्टोरियंस have to be very very careful about how they interpret it, क्योंकि they have to be careful about ये किसने लिखा है, किसके perspective से लिखा है, किस काम के लिए लिखा है, किसके लिए लिखा है. In focusing on the Mahabharata, a colossal epic running in its present form into over 1 lakh verses, with depictions of a wide range of social categories and situations, we draw on one of the richest texts of the subcontinent. It was composed over a period of about 1000 years
from 500 BC onwards, and some of the stories it contains may have been in circulation even earlier. The central story is about two sets of warring cousins. The text also contains sections laying down norms of behavior for various social groups. Occasionally, though not always, the principal characters seem to follow these norms. What does conformity with norms and deviations from them signify? So the Mahabharata is like an epic running into about 1 lakh verses and more, and the central idea is two sets of warring cousins. We all know the basic story, the Pandavas and the Kauravas. They are the two sets of cousins who fight over who will be the next ruler and all that. Ye figure we need to remember, a terracotta sculpture depicting a scene from the Mahabharata in the West Bengal, 17th century. Please, every word of your NCERT is very important.